Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back once again. So dear teachers, today is day 2 of the sound that we learned in the previous lesson. और किस किस बच्चे को याद है कि हमने कौन सी साउंड सीखी थी, उसका फेस देखा था और एक स्टोरी भी पढ़ी थी। जी हाँ, उस स्टोरी में था जिक्र रेन का, रेनबो का, रैबिट का। तो जनाब जिसने मज़ीद कुछ वर्ड्स कलेक्ट किए और टीचर के साथ शेयर किए तो उनके लिए शाबाश। और आज हम क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे उसी साउंड की जिसको हमने प्रैक्टिस किया था। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव डन देयर वर्कशीट एट होम, प्लीज रेज अप योर हैंड्स। शाबाश, आपने जो वर्कशीट की है अब हमको क्लास में भी तो हम प्रैक्टिस करेंगे ना। सो टीचर्स, टुडे इज डे 2 फॉर द फेस राइटिंग of the sound r, and as usual that you know that we practice from recalling the concepts of the previous day। और previous day में चूंकि इन्होंने बहुत सारी लिस्टिंग स्पीकिंग की है और आपने इनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करने का मौका दिया है, तो आज ही आपको प्रिंट मटेरियल में बहुत सारे र के फेसेस ढूंढ के दिखा देंगे। और ये है जनाब डे 2, और डे 2 में हमारे ELOs कौन से हैं, रीडिंग एंड राइटिंग के। सो टीचर्स प्लीज स्टार्ट from the face of the sound. Either you can write it on the board or use a flashcard. Begin to recognize letters of the alphabet, and then we will do some writing practice to trace on today's sound, which is the sound R. Shabash, very good. I hope you got the clue from the screen. जी हाँ, स्क्रीन पे जो फेस है वो है किस साउंड का, R. जी हाँ, और ज़्यादा ज़्यादा आपने ये साउंड बनानी है क्योंकि व्हेन आई से दिस साउंड तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जैसे हम कहते हैं ना मोटरसाइकिल चलाने, सी हाउ मच फन दिस इज। So sounds are so much fun when you want to play with them also. So this is the face of the sounder. और हमने राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे की थी, in the air and on the table, or you might have practiced here. Yes, teachers make them sense it on their hands or on their friend's hand. So first we go down, then we come up and take a little round, a curve. Yes, down, then up, and then a little curve. So let's continue and see किस किस को जो इसके साथ वोकैबलरी है वो याद है। मुझे तो कुछ और वर्ड्स याद आए थे तो मैंने जल्दी से आपके साथ शेयर कर दिए। ये मुझे क्या नजर आ रहा है, एक रोड है, रोड, वेरी गुड। और उसके ऊपर बहुत सारी कार्स स्टक हैं, लोग स्टक हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती तो हम क्या कहते हैं, ओहो बहुत रश है। रश इज एन इंग्लिश वर्ड, लेकिन हम उसको कॉमन इतना इस्तेमाल करते हैं कि हमें लगता है कि ये उर्दू का लफ्ज़ है। रश इज एन इंग्लिश वर्ड एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम साउंड r. Okay, so now these words that we practiced in the last class was rainbow, red roses, a rabbit, and then we also talked about some rain. And rain के साथ मैंने एक और वर्ड भी रिपीट किया था, किसी को याद है वो जब पानी नीचे खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, puddle. Very good. And how many colors in the rainbow? 7. Awesome. You guys are little geniuses. तो चले practice कर लें writing की मेरे साथ, and then you will be having your own book to write on. So following the numbers, 1 says go down, 2 says go up, and 3 says take a turn. So down, up, and then turn. Yes, this is the face of the sound r. And then there is something you have to color which starts from the same sound. इसका क्या नाम होगा, ये जमीन पे बिछा होता है, rug. Very very good, rug. So teachers see how many words they have learned, और आपने अब इनको आज करानी है tracing on the face of the sound and they will color in the rug. So you can divide the class into 2 groups. आधी क्लास जो है वो आपके साथ वोकैबलरी डिस्कस कर ले, आप उनके साथ रीडिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए और बाकी क्लास को राइटिंग पे लगा दें, एंड देन यू कैन स्विच द टास्क. सो दिस इज द पेज for individual tasks when children will sit all by themselves, and this is the worksheet they can take home for practice to write the face of the sound r. So teachers, आज के हमारे जो गोल हैं रीडिंग और राइटिंग के, they are not possible without the help of listening and speaking. And I hope अब तक तो आपको इस बात की खूब अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग का डे टेक्स लॉन्गर, रीडिंग एंड राइटिंग का जो डे है वो बच्चों के जब हम हवाले करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. सो लेट्स एंड अप द साउंड एंड द डेज. वी डिड 2 पेजेस in the textbook and definitely there must be a lot of new words जो आपने बच्चों के साथ इस साउंड के लिए शेयर किए होंगे. So take care, continue. Allah